ऑलराइट, डे 3 ऑफ पाइथन। आज स्ट्रिंग इंडेक्सिंग देखेंगे और एक प्रोग्राम बनाएंगे जो कल रह गया था। लेट्स गो। Dash right here. Yeah, you can use negative indexes too. Let's talk about step. Using the step field, we can access the characters in a string by a given चल step. रहा है ना? We can count ठीक है। by twos, or we can count by threes. So here's an example. So let's take our credit number. If we're not filling in the starting स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। लिनक्स मत बोल यार। अच्छा हाँ। 12 2। हम्म हम्म ठीक है। लेट्स गो। 1, 2, 3, 4. So we did not अभी तक बेसिक रिवीजन देख लेते हैं। बेसिक रिवीजन तो इफ एल्स एलिफ पढ़ चुके, नॉट एंड और पढ़ चुके। इसको कहते हैं कंडीशनल। एंड और इसको कहते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स या टर्नरी ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स कंडीशनल ऑपरेटर्स टर्नरी ऑपरेटर्स कब होगा? जब इसके अंदर ही इफ स्टेटमेंट के अंदर ही इफ एल्स यूज करो, यूज करो। हम्म, फिर हम आ गए थे स्ट्रिंग्स पे। स्ट्रिंग्स नाम क्या कहता?
conditional expression, logical operator, if else, string indexing, string methods, strings में जैसे कि len, strings जैसे कि नेम लिया, नेम को दे दिया सात्विक, सात्विक दे दिया, नेम को डाल दिया इसमें, ठीक है, नेम है। तो रिजल्ट क्या करते हैं, नेम डॉट लेन डॉट लेन कर लो, प्रिंट रिजल्ट को रिड्यूस हो गया, ठीक है। नेम डॉट लेन में डाल दो नेम, अच्छा तो लेंथ आ गया, स्टेटमेंट दूसरा रो, रिजल्ट इज इक्वल टू इस डिजिट नेम, फिर यार नहीं, नेम नेम डॉट इस डिजिट फॉल्स, और क्या था, रिजल्ट इक्वल टू डॉट अपर, सबको अपर केस कर देगा, तो सबको लोअर केस कर देगा, और रिजल्ट अगर नेम इस डिजिट अपर, और वो क्या था, इस विलियम, Hey, everybody. In this topic, I'm going to. नेम था I'll be sure. फाइंड, हाँ, नेम डॉट फाइंड, फाइंड में डाल दो आर फाइंड करना, तो नहीं होगा तो -1, आर फाइंड तो भी -1, कितना एस फाइंड करना है, तो 0 पे है एस, ठीक है। फिर रिजल्ट रिजल्ट प्रिंट करना है, डॉट क्या था इसके बाद, कैपिटलाइज, काउंट, काउंट में हम डाल दिया, टी काउंट करना, तो 80 है, फिर टी इतने डाल दिए, टी को डाल दिया तो 5T
एम्प्टी है, स्पेस कितना 0 है, अब कितना है 4 स्पेस है। तो ये है पूरा का पूरा स्ट्रिंग इंडेक्सिंग, लेन, नेम, इस डिजिट, अपर लोअर, फाइंड, काउंट, और भी काफ़ी थे, अल्फ़ा वल्फ़ा। फिर इसके बाद आएगा स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग में क्या है तुम्हारा, ये ब्रैकेट यूज़ होंगे, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप, ये होता है। तो स्टार्ट पे करना होगा 0, जहाँ से भी या से भी शुरू करना चाहते हो तुम, वहाँ से शुरू कर लो। स्टॉप पे रुकेगा, स्टेप पे जंप करेगा, इतना ही है। हम्म, वैलिडेट ना होगा, वैलिडेट यूजर इनपुट 12 characters, then 12 characters, no space and no numbers। तो पहले तो नेम ले लो, नेम इज इक्वल टू इनपुट, नेम इनपुट हो गया, इफ रिजल्ट इज इक्वल टू if len name is greater than equal to 12 and no space, no number, pha क्या होगा वो? मेरे पास मेरे वो दीदी का नहीं था जो मेरा होना चाहता जो हो नहीं पाया उसका क्रेडिट कार्ड था। फेल दिया? नहीं मैंने कुछ खरीदा नहीं है, तो मुझे बेसिकली एक ऑब्जेक्शन खरीदना था, हाँ। उसको पैसे ऐसे लग रहे फ्री में होना था। एक बार बाद में लफड़ा ना आ जाए यार। if len name print ठीक है, अब स्पेस भी नहीं होना चाहिए, स्पेस ना हो तो क्या करना चाहिए? greater than
इनपुट किया, एंड में डाल दो। हम्म हम्म क्या चोर भंगड़ा है यार ये। फाइंड लग गया। ये क्या बकचोदी होती है यार इसमें। चल रहा है साला। हम्म
कैसे बताऊं मुझे हो गया Boom. Fuck यार वैन का ब्लेंडर और एक और गाना एंड कोई डिजिट नहीं होना चाहिए एफ An else if statement.
if my first and last name, you might need to think of something that's underneath 12 characters. We can use the is alpha method if a is alpha. Username, I guess within a different if. अल्फा कहाँ है? fuck यार. कितना देता है माइनस करना. कैसे हो रहा है बे? हाँ हर्ष. हेलो हेलो. क्या व्हाट्सएप चेक करूँ? कर रहा हूँ. Statement. हाँ ठीक है. All right, I'll type in a username. I'll include some digits. Your username can't contain numbers. All right, I think we've accomplished this. तो मतलब नंबर नहीं है. लैंड मेरा. Let's
Mm. Well, 5 colon 6, 7, 8, 9. Then we will print whatever is here. The next set of digits is 5, 6, 7, 8. Maybe we need the last 12 digits. Well, what we could do in that case, we will take our string variable, credit number, set the starting index to be, let's see, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5, colon. If you need everything up to the end of the string, you don't need to list an ending index, just be sure to add that colon. Python then assumes you need dash right here. Yeah, you can use negative indexes too. Let's talk about step. Using the step field, we can access the characters in a string by a given step. We can count by 2s, or we can count by 3s. So here's an example. So let's take our credit number. If we're not filling in these starting or ending fields, but we need a step, we would need 2 colons then. Python is assuming everything from the beginning of the string to the end then. Our step will be 2. This will print every second character within our string. Yeah, here we are. We have 1, 3, dash, 6, 8, 9, 1, so on and so forth. If I were to change the step to 3, we would count every third character, beginning with 1, 4, 6, dash, 1, 3, 6. All right, here's a practical example. Let's create a program to get the last 4 digits of a credit card number. I'm going to assign this to a new variable. Last digits equals our credit number, indexing operator. So we need the last 4 digits. Where would the starting index begin? Well, we could use negative indexing. This last digit is -1, -2, -3, -4. We will begin at -4. Colon. We can omit the ending index. Python assumes we need the rest of the string then. Really, that's all we need. So let's print. I'll use an F string. Maybe some X's. Maybe we're hiding somebody's credit card number except the last 4 digits. Okay, then. Variable, last digits. All right, and here's our credit card number, where only the last 4 digits are visible. Hey, you know what? Let's add one more exercise. Let's reverse the characters in the string. I'm going to reassign credit number equals credit number. If we need the entire string, we don't necessarily need a starting index or an ending index. But for the step, this will be negative. -1 will reverse a string. Then let's print whatever our new credit card number is. Print credit number. And yeah, there is our credit number backwards. To reverse a string, you set the step to be -1. So yeah, everybody, that is string indexing in Python. We can access ठीक है तो हम्म, हम्म, तो -1 बच गया
ठीक है. Elements of a sequence using the indexing option and explain format specifiers. Format specifiers, when used in the context of an F string, they allow us to format a value based on what flags are inserted. Following your value, you would type a colon and then some flags. Depending on what flags you insert, it will format your output a certain way. You could add decimal point precision, allocate space, zero pad values, left justify, right justify, center align, all sorts of things. Let's have some practice. I'll create 3 prices. Price 1, price 2, price 3. Price 1 will be 3.14159. These values aren't in dollars and cents yet, but they will be. Price 2 will be negative 987.65. As you can see, I'm just making up numbers here. Price 3 is 12.34. Let's display our prices using some F strings. Price 1 is placeholder price 1. Then we will do this for price 2 and price 3. Price 2 is price 2. Price 3 is price 3. Within our placeholder, following the value, we can add a colon, then some flags. Those flags are the format specifiers. They will format our value a particular way depending on what we insert after the colon. To add decimal point precision, you would type, after the colon, dot, then the amount of decimals to be displayed, maybe 2, then F meaning floating point number. Let's do that with price 2 and price 3. Colon, dot, 2, F. Price 1 is now 3.14. Price 2 is negative 987.65. Price 3 is 12.34. I think I'm going to add some dollar signs before the placeholder. Yeah, that's much better. For less precision, maybe 1 decimal place, you can change the 2 to a 1. So 0.1F. Each number only displays 1 decimal, 0.1, 0.6, 0.3. Whereas in 0.3F would display 3 decimal places, 0.142, 0.650, 0.340. Even though price 2 and price 3 only have 2 decimal places in the original numbers, we will concatenate some additional zeros. To allocate space to display a value, after the colon, add some number for that many spaces. How about 10? Each value now has a total of 10 spaces to display the output. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. If you were to precede a number with 0, well, these numbers would be 0 padded. Each number is now 0 padded. To left justify a value, you would use a left angle bracket. All these numbers are now left justified. Then we have all of the space after. They're all uniform. Right justify would be a right angle bracket. And I believe that's the default. Center align, I believe, is the caret symbol. Yep, our numbers are now centered. If you have any positive values and you would like to display a plus sign, just use plus.
Any positive number is preceded with the plus sign, any negative number is preceded with the negative sign. Or you could use a space for any positive numbers. So colon, space. These numbers are lined up evenly, even though we have a negative number in here. There is a thousandth separator, which is a comma. We should probably increase the value of our prices. 3,000, negative 9,870, 1,200. Each thousandths place is now separated with a comma. We could also mix and match flags. I would like a thousandth separator along with decimal point precision of 2 decimal places. And why not? I will precede each number with a plus sign if it's positive. Yep, here we are. So based on what you're looking for, you can add some combination of flags. So yeah, those are format specifiers, everybody. Within your placeholder, insert your value. Hey everybody, in this topic I'm getting Why? Basically alignment कर देगा तो स्टूडेंट वन ले लो फिर मार्क्स एंड 20 फल खरीदा हेलो आवाज आ रही है हेलो जी ओके सो गाइस थोड़ा सा मैं एक्चुअली लास्ट वीक बिजी था एंड हर्ष ने मुझे इनको दे दिया है थोड़ा बहुत सो सब कुछ समझ आ गया पहले बता दो एक बार अगर सबने पढ़ लिया हो तो मेरी दीपक वैभव ने थोड़ा सा देखा है तो आई थिंक वैभव अगर कुछ कुछ बता देगा तो सबका समराइज भी हो जाएगा तो हाँ बिल्कुल भाई प्लीज स्टार्ट करो भाई ये एआई पावर्ड इंश्योरेंस मॉडल बनाना है इसमें लीगल करके के मतलब अगर कोई भी एनवायरमेंटल इंसिडेंट होता है तो उनकी मतलब उससे वो नहीं हो पाती कमाई नहीं हो पाती उसके लिए मतलब वो पहले से हमारा प्रीमियम लेके रखेंगे अगर ये ऐसा कुछ होता है तो ये पहले से मतलब उनको कुछ क्लेम डालने की जरूरत है नहीं हम डायरेक्ट उनको पेमेंट कर देंगे क्लेम कर देंगे उनका जैसे कि तो बट एक चीज है बोलो देख मैं ये कह रहा था कि इसके अंदर जो एआई पावर हमने एआई पावर डाला है उससे पहले हमें उनकी इनकम कैलकुलेट करनी है और अगर बारिश वगैरह होती है या कुछ ऐसा फ्लडिंग वगैरह का सीन आता है तो हमें उन्हें डायरेक्टली पेमेंट करना है और हमें उनकी एक एवरेज इनकम का कैलकुलेशन करना है और उनके प्रीमियम का कैलकुलेशन करना है कि कितना वो हमें प्रीमियम पे करेंगे कि एट द एंड अगर हमें उन्हें कभी पे करना पड़ गया तो हमें नुकसान ना है हमारी टीम को और जो प्रीमियम पे कर रहा है उसका भी नुकसान है ऐसे ही है ना मैम हाँ मतलब अभी थोड़े वो भी डालने हैं मैं एक चीज ये पूछता हूँ तूने अभी भी डायरेक्टली बोला कि तो उन्हें क्लेम नहीं करना पड़ेगा हमारे थ्रू राइट उन्हें डायरेक्टली पैसे मिल जाएंगे राइट तो तुम्हारा सिस्टम डिटेक्ट कर रहा है कि कहाँ पे क्या वेदर सिचुएशन है और किसी इंडिविजुअल फॉर एग्जांपल कोई बंदा दिल्ली में रहता है दिल्ली में फ्लड आ गई है तो तुम्हें पता है तुम्हारे दिल्ली के यूजर्स कितने हैं डिटेक्शन कितना है वो सब पता होना चाहिए ना आपको ऐप या वेबसाइट जो भी है तुम्हारी उसके लिए तो वही कंसर्न है कि अभी हम क्या कैसे फ्लॉज अच्छा है अभी ये मतलब अभी ये चीजें फिक्स आउट नहीं है मतलब है ना हाँ ठीक है एक बार मैं तो समराइज कर तू सही से समराइज कर रहा है जो भी गलती होगी एक बार देखेंगे फिर बात करेंगे है ना एक बार समराइज कर हाँ भाई मतलब ये सिर्फ आपको मॉनिटर करते रहना है अगर कुछ हो रहा है उस वीक में मतलब वीकली वाइज करना है इसको उस वीक में अगर किसी दिन हो रहा है ऐसा तो उसको ऑटोमेटेड क्लेम मिल जाएगा वहाँ पे उसको देने की जरूरत है नहीं अगर तब भी बंदा दे रहा है
तो मतलब सिस्टम मॉनिटर करेगा कि वो मतलब उसी लोकेशन में काम करता है, वो मतलब जहाँ पे भी उसने डाला है वो मॉनिटर करेगा, ये देखेगा कि मतलब वो रीक्लेम तो नहीं कर रहा, मतलब चेक भी ना कर सके, तो ऐसा भी करना है। तो मैं इतना ही है और भी कुछ? इतना ही है भाई, बाकी आप अंदर से आप अपनी तरफ से भी डाल सकते हो उसमें। हाँ वो तो हम कर लेंगे। तो मैक को अभी तक जितना ओवरव्यू हुआ है बेसिकली ये है, फॉर एग्जांपल कोई भी गिग वर्कर है जो भी काम कर रहा है, ठीक है। अभी क्या होता है, जैसे हर्ष ने बता भी था मुझे, तो प्रॉब्लम ये है कि अभी जैसे बारिश वारिश आ गई, फॉर एग्जाम्पल फ्लड आ गई, तो उस दिन की कमाई नहीं हो सकती, वो नहीं जा सकते, राइट। उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं कि हम लोग एक इनकम सिस्टम बना रहे हैं जहाँ से फॉर एग्जाम्पल जैसे पीएफ कटता है ना, वैसे उनके में से थोड़े थोड़े पैसे कटते रहेंगे, एंड उस दिन जब भी ये चीज़ होंगी तो हम उन्हें उस दिन का पे कर देंगे, उस दिन का या उस पूरे मंथ जो भी जितना भी ड्यूरेशन, राइट। जितने दिन काम नहीं करेंगे उतने दिन का। अच्छा ठीक है, तो जिस दिन भी काम नहीं कर जितने दिन काम नहीं करेंगे उतने दिन हम पे कर देंगे, लाइक द पीएफ टाइम। बट वो तो क्लेम नहीं करना पड़ेगा। अब क्लेम नहीं करना पड़ेगा तो क्लेम ना करने का सिचुएशन ये बनती है कि हमें प्रॉपर्ली डिटेक्ट करना है कि हमारा यूजर है कहाँ से, ठीक है। और उस एरिया का जो भी क्लाइमेटिक फैक्टर है या फिर कोई भी कंडीशन जो भी दूरी बेकार हुई है, वो हमें डिटेक्ट करनी पड़ेगी। अब उसके हिसाब से हमारा सिस्टम डिटेक्ट करेगा कि यहाँ पे मान लो ये चीज़ खराब है, तो उस जगह जितने भी यूजर्स हैं उनका जो भी फंड है वो उसके हिसाब से ना अलॉट करता रहेगा, राइट। दैट्स हाउ दिस वर्कफ्लो विल गो। हाँ, और इसमें एक चीज और है कि लाइक अगर हम ग्रेटर नोएडा की बात करें, नॉलेज पार्क की बात कर रहे हैं, एक ड्राइवर क्लेम कर रहा है कि हाँ बारिश हो गया और मैं काम पे नहीं जा पा रहा, तो उस पूरे एरिया के ड्राइवर्स को ऐसा लगाते हैं ना कि आप फ्लडर या काम नहीं किया रहता, तभी जाके वो मतलब जो फेक वाला क्लीनिंग हट गया ना कि कोई जबरदस्ती फॉल्स But क्लीन नहीं कर सकता। फिर एक बात है ना हर्टिंग है तो सबके लिए है। हर्ष, एक बात है ना कि अभी वैभव ने एक बात बोली थी कि क्लेम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहे हैं, तो या तो मैं मतलब अभी फॉल्स क्लेम की बात चल रही थी ना कि कोई रीक्लेम या फॉल्स ना कर पाए, तो मैं उसके लिए कह रहा हूँ कि फॉल्स इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि अगर नॉलेज पार्क में एक भी ड्राइवर वर्क कर रहा है तो लाइक फिर तो जो दूसरा छुट्टी ले रहा है वो अपनी लाइक काम चोरी या आलस की वजह से छुट्टी ले रहा है, इसमें सिस्टम की कोई गलती नहीं है और हर्ष, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लेम नहीं मिलेगा। मैं ये बोल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल कोई भी, फॉर एग्जाम्पल 2 गिग वर्कर है, ग्रेटर नोएडा में ही है, ठीक है। अब हमारा सिस्टम डिटेक्ट कर रहा है कि ग्रेटर नोएडा में बारिश हुई, ठीक है। अब एक बंदा बोल रहा है कि नहीं मैं तो इसमें काम कर लूंगा, ठीक है। और एक बंदा बोल रहा है कि नहीं बारिश काफी है मैं नहीं करता। अब हमारे सिस्टम की डिफॉल्टिंग्स ये नहीं है कि हम लोग ये नहीं पूछ रहे हैं, हम यूजर से नहीं पूछ रहे हैं कि बारिश हो नहीं रही हो रही है, हमें पता है क्लाइमेटिक कंडीशन खराब है तो हम दोनों को अलॉट कर रहे हैं, राइट। अच्छा ऐसा कर रहे हैं, ऐसा ही करना पड़ेगा ना एज वेबसाइट। अगर हम बात कर रहे हैं कि यूजर क्लेम ही ना करे, हम डायरेक्टली दे रहे हैं, तो हमारा सिस्टम इतना एडवांस्ड है कि हमें पता है कि वहाँ पे दिक्कत चल रही है, हम अपने आप कर रहे हैं। इसमें फ्रॉड का काम ही खत्म हो गया। हम यूजर से अगर पूछेंगे ना कि यूजर बता रहा है भाई यहाँ बारिश हो रही है, फिर तो हमारे नुकसान है ना। यूजर कुछ भी बता देगा, अब उस पर आप कितना ज्यादा वक्त लगा सकते हो ये सोचो। फॉर एग्जाम्पल यूजर बोल रहा है कि भाई यहाँ इतनी बारिश हो रही है, फॉर एग्जाम्पल ये ले ले कि गाजियाबाद है, मतलब गाजियाबाद में थोड़ी देर बाद बारिश हुई है, ग्रेटर नोएडा में थोड़ी देर पहले बारिश हो गई और ज्यादा बारिश ग्रेटर नोएडा में हो रही है, तो बंदा तो ये बोलेगा ना। तो आपको सर्टेन एरिया के हिसाब से क्लाइमेटिक पैटर्न का चलना पड़ेगा ताकि फ्लॉल्स क्लेम का टेंशन ही खत्म। ध्यान सोचो अगर मैं बोल रहा हूँ, ठीक 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 समझ में आ गया है ना। तो इसमें फॉल्स क्लेम की बात ही एकदम से खत्म हो गई, कोई ले नहीं सकता। अगर है तो सबके लिए होगा, क्योंकि बारिश है तो सबके लिए है ना, सिंपल सा। फ्लड आई सबके लिए आई, ये थोड़ी दो लोग We can explain while loops. A while loop will execute. कर रहे हैं कि यहाँ पर हमें क्या फ्लडिंग का नॉट और बारिश का आई से हर्ष भाई, नॉट Alright. वेरी प्रेमली। तो इसके लिए मुझे जो लगता है वो conditional ये लगता है statements, कि आपको ternary, if पिछले else, 5 साल से 6 साल का and डेटा or सेट not, लेना पड़ेगा conditional, क्लाइमेट का, ternary हो गया, इंडिया का, और वो भी लोकल एरियाज strings, का, जहाँ पे मतलब जितने भी string एरियाज में गिग indexing, वर्कर्स हैं जहाँ format भी है, specifiers. पूरे इंडिया का लेना पड़ेगा Yeah, आपको हर एक स्ट्रीट का। this is it एंड for उसके today. हिसाब से वो जो मॉडल ट्रेन, कल आगे while for हाँ loops वो का हमें खुद ट्रेन देखूंगा. करनी है। Yeah, bye. वो ऑलरेडी